Good morning. Welcome, Narinder ji. Welcome, welcome. Good This is morning. Good morning. Monday, already March 7th. Dekh lo. Yeah. Time goes so fast. It's already March, and we're planning um, ILI Holy Party bhi aa rahi hai, and a lot of things are coming up. Good morning, Shalini ji. How are you? Lot of And things are coming. yeah, a lot of things are coming, and yeah, we got to get the tickets from me for the Holy, Narinder ji. मेरे पास tickets हैं. Okay. Because we're selling tickets over here. But anyway, I want to thank my friends. I want to do that again for praying and inquiring about my son-in-law. Thank God he's home, and he's not fully out of the woods, but he's recovering. He's getting better, and I could say in that case, things are a little better. बट अदरवाइज सिचुएशन जो अभी वॉर एंड पीस की हमारा टॉपिक है. वॉर एंड पीस अभी तो वॉर बहुत ज़बरदस्त हो रही है. बिग जॉइंट कंट्रीज ट्राइंग टू टेक ओवर स्मॉलर कंट्री. दिस इज़ व्हाट हैपन्स. वर्ल्ड वॉर में भी ऐसे लाइक ऑल दीज थिंग्स हैपन. द इनोसेंट पीपल गेट punished and slaughtered, basically, a lot of them. Yeah. So that is very sad. Innocent children, they get caught up, they don't know what's happening, they don't get food to eat. सो आजकल नरेंद्र जी आपने जो टॉपिक हमने चुना है, वॉर एंड पीस, इज़ वेरी अप्रोप्रिएट फॉर दिस टाइम ऑफ द वर्ल्ड व्हाट वी आर गोइंग थ्रू. सो या कैन यू यस कैन यू हेयर मी एवरीबडी? कैन एवरीवन हेयर मी? But Shalini ji is saying she cannot hear. I mean, we have everything on. Ramaji, can you hear me? Anyway, good morning, everybody. We're going to start. So, Narinder ji, welcome. Welcome. Thank After you. a couple of weeks, you were away. Um, good morning, Kamlesh ji, Ramaji, Madhu ji, Shalini ji. Please let me know, everyone, if you can hear us. I mean, we are doing, yes, okay. Thank you, Kamlesh ji. Okay, so you were away for 2 weeks. I mean, not. I mean, you're coming here after 2 weeks, but you were away to Hawaii. So let us know, how was your trip? The trip was very nice. It's a bounty full of nature. Yeah, it's a beautiful And place. you totally change when you go there. Yeah, It's so beautiful. it is Beautiful. beautiful. Narinder ji, I've been to Hawaii like 5-6 times Mhm. because मेरी best friend Maui में रहती थी. Acha. She was my next door neighbor in Bangkok. I lived in Bangkok for 4 years, Mhm. and she was my next door neighbor. So we were like 12 years old, 11, 13. We were Wow. very good friends. Same class, school में जाना. And then when I came here, I mean, I was in New York. Somehow we got connected again, and then she was in Maui, Hawaii. Okay. And then she called me. So I used to go there every couple of years to see her. So Maui, I mean, I went to Maui. I loved Maui. Such a main island, beautiful. Maui was extraordinarily beautiful. Yeah. Nature, kitna acha tha. So when I went to Hawaii, I said, you know what? This is the place I want to live. I look like everybody. I look like the Hawaiian. I look like, I look like them. I feel like them. I want to stay here. This is my place. I want to live. So I That love is that true. place. It's a beautiful place. तो चलो आज का टॉपिक थोड़ा इट्स अ लिटिल बिट डेलिकेट टाइप बिकॉज अकॉर्डिंग टू द टाइम्स राइट नाउ. सो वी आर गोना टॉक अबाउट वॉर एंड पीस. सो नरिंदर जी, प्लीज वेलकम. आप शुरू कीजिए. Thank you, Veena ji. And I have been complimenting you more than enough that you are running this show with dedication and commitment, and people really love it. And so credit goes to you. Keep it up. Keep it up. You are serving the society in a different way. Yes. The topic which we have selected today is war and peace. Yeah. And there is a very famous book written by Lev Tolstoy, Yes. Russian writer, and it is very timely and relevant information. In order to discuss the concept of war and peace, we must understand what is war and what is peace at our smallest level, which means individual level. Yeah. Society is made of individuals, and country is made of society. Don't come back. It's making too much noise. Sorry.
Something making too much noise. I wanted to go and That's okay. close that. Okay. So country is an entity where a lot of people live. For all those lot of people, they are all individual people. You and me are a part of the country, wherever we live. If we live in India, we are part of India. We are living in the United States, we are part of the United States. So having said that, all countries and their citizens, they are a part of their own country. So individuals से country बनती है. Country कोई utopian idea नहीं है. It is made of people. तो उस country में people कैसे हैं? This is the insight, reflective thought. Yes. And then who is the person who is leading those people? He is also individual. वो तो हमने उसको through democratic process चुन दिया है, elect कर लिया है, लेकिन he is individual people. So when he goes to the, let us say, why if the person is elected through elective process, and he goes to the White House, so he becomes the president, right? But he's still an individual human being. Yeah, that's true. Without becoming the president, what Yes. he was, he will be the same person. Yes, that is true. Presidency will not change him inside out. Whatever he is, he will remain the same. His decisions, his thoughts, his vision will be exactly according to his inner personality. So that point is extremely important. Countries don't fight, people fight. If India versus so and so, India does not fight, it's the people who fight. People who fight, yeah. So, first of all, if the people are peaceful and the leader who is leading them is peaceful, before elected as a president or the prime minister, then chances are he will stay peaceful at the highest office of the country. But if he is agitated, excited, he will be doing the same thing at home with his wife, with his family, and going to the presidency, his decisions will be all agitated, excited. So this is what is happening. Two people, in Russian context, it is the Putin, and in Ukraine context, the president of that country also. They both are very excited people from inside. And it is they make it their own prestige question without looking at the welfare of the citizenry, the people who are living there. Right. So now if you look at the war started, does not matter who started, but both parties knew the repercussions of the war. When the bomb drops, it does not discriminate between senior citizen or the newborn baby or the young or the soldier or the person going to office. Bomb has no discrimination. Yeah, that is true. So I, being a leader, I have to be thoughtful. My country is composed of, it is consisted of many type of populace. उसमें बच्चे भी हैं, senior citizens भी हैं, माँ भी है, बाप भी है, भाई है, बहन है. There are a lot of close friends who will be killed in the process because the bullet does not understand. Once you shoot the bullet, when it's out of the pocket, it does not discriminate. So I should be extremely careful as a leader that I should not start it. Now we are seeing so many pathetic scenes. छोटे-छोटे बच्चे इधर जा रहे हैं, strollers में, on the shoulder of the parents, and it's really soul tearing scenes. But who created that? Now you cannot complain because the war started, and the armament you are using, they don't have any discrimination. उनको नहीं पता कि ये बच्चा है, बॉम्ब को क्या पता कि बच्चा है कि बूढ़ा है, कौन है.
So as a leader, it is my responsibility. It is the responsibility of the people who are at the helm of affairs. Their decision should be very thoughtful. Should be very thoughtful. If we make prestige questions of everything, then there is no peace at all. You see, at a lower level in Long Island, I'm just giving to make the point clear. There are a lot of associations, right? Yeah. And there is so much infight, fierce infight. The only difference is they don't have the armament. I am telling you, if law permits and everybody had certain firearms, the situation will be Ukraine in Long Island. जस्ट अ क्विक ऑब्जर्वेशन नरेंद्र जी, जो आपने बोला अभी कि इतने सारे यहाँ पे ग्रुप्स हैं और एवरीबडी वांट्स टू बिकम द लीडर और द प्रेसिडेंट और समथिंग, अपनी कुर्सी के लिए कुछ क्या भी कर लेंगे, झूठ भी बोल लेंगे, हेरा फेरी भी कर लेंगे, जस्ट टू गेट दैट सीट फॉर 1 year or 2 years maybe at the most. You made a very good point. Yeah. And then उसके बाद में तो बैक टू नॉर्मल और नीचे ही आएंगे ना. Yeah. बाद में कोई पूछता भी नहीं है कौन है तुम, कौन हो. नोबडी केयर्स. 1 साल के लिए तुमने इतनी हेरा फेरी करी. सो दिस इज लाइक अ स्मॉल थिंग, बट कंट्री में भी ऐसे होता है. टू गेट द प्रेसिडेंसी, That is exactly the same thing they do in a larger scale. This is in a small scale, that is in a large scale. So उधर भी ऐसे ही होता है. One country is powerful, one country is small. So let us superimpose the same scenario of Long Island. If one of them is Ukraine and the other one is Putin, right? Just imagine we are superimposing these personalities who are fighting at the lowest level. If they become the presidents of the countries, what they will do? They will do exactly what they are doing here. Yeah, exactly. Again, if Yes. an association of 100 people you cannot manage, it's a country of millions and millions of people. So my point is that does not matter one is a president or a secretary or whatever status in society they have. If they don't understand the welfare of the community and their interest overpower the interest of the society, then the conflict starts. It starts at the social level. It starts at the country level. Because the people inside are egomania. They want to satisfy their ego. They does not care for the society. So if, again, I'm coming back to Long Island because it is better to understand the concept. We are talking of the concept of war and peace. So there is a lot of war. The only difference is nobody has the firearms. If the firearms are provided to these people who are fighting for little small petty positions and hurting the interest of the society, the community, they will do the same thing at the national level. Yeah. At the national level. So this is one concept, that the society is made of people. If the people are sincere, faithful, Yeah. and society service oriented, their main mission is to serve the people, not to themselves and to their interest. This is the first condition to maintain peace, even at the lowest status of the society, at the highest, which is the country. Second is peace is related to love. When you love somebody, you are peaceful. If you hate somebody in whatever fashion, in whatever style, you are not peaceful. So our topic is war and peace. War, I gave you little hint. What is the war? And now we are talking of the peace. Peace is related to love. और love जो होता है, it is of two types. एक है man-made love, एक है divine love. Yeah. दो love होते हैं. Most of the people, most of the time, we practice the art of man-made love. Man-made love, yeah. Man-made love, now this is the golden thread we have to understand. Man-made love is necessity-oriented.
जितनी देर मुझे आपकी जरूरत है मैं आपको लव करता हूँ। मेरी नेसेसिटी खत्म हो गई, नीड बेस है, वो नीड खत्म हो गई, मेरा लव भी जो है डाइल्यूट हो गया। दिस इज द सिनेरियो ऑफ मैन मेड लव। घरों में, रिलेशनशिप्स में, फ्रेंड्स में 99% people their love is need based, need based. Yes, I was going to say that. बिल्कुल ठीक बोला आपने, So बिल्कुल ठीक बोला. when that need is fulfilled, then my love is diluted. Love is diluted. And that is what is happening. That is what is happening. सबको नेसेसिटी के मुताबिक हमने रिलेशनशिप बनाए हुए हैं, लेकिन जो नो दिस इज माय पॉइंट, भगवत गीता का जो ज्ञान है, जो विजडम है, वो कहती है कि नहीं, देयर इज अ बेटर वे, बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड सेलेस्टियल विजन है उसमें। ये डिवाइन लव को प्रैक्टिस करो। डिवाइन लव, या डिवाइन लव होता है जो लव, दैट इज द लव कमिंग आउट ऑफ योर सोल, जो आपकी आत्मा है, उससे प्यार करते हो। ये जो मैन मेड लव है, इट इज intensified and directed to ego. Yeah, that's true. जहां आपकी ईगो हर्ट नहीं होती, आप लोग प्यार करते हैं। जब ईगो का थोड़ा सा भी उस पे हिट होती है तो हमारा प्यार खत्म हो जाता है। तो प्यार का दूसरा नाम हम फ्रेंड भी यूज करते हैं। तो एक ही आदमी को 10 साल में 5 बार हम कहते हैं कि ये मेरा फ्रेंड नहीं है, ये तो बड़ा गंदा आदमी है, और 5 बार फिर उसको हम फ्रेंड बनाई जाते हैं कि नहीं आप ठीक हो गया है, ठीक, उसका तो कुछ नहीं हुआ, ये तो मेरे माइंड में था। मैं ही किसी को फ्रेंड बना रहा हूँ, मैं ही किसी को कह रहा हूँ कि अब ये फ्रेंड नहीं है, बिकॉज इट इज ए मैन मेड नीड बेस्ड। तो इफ वी अंडरस्टैंड देयर इज अ बेटर ऑप्शन, जब आप आत्मा से प्यार करते हो, जितनी भी हम कथा सुनते हैं, श्री फरियाद की, लैला मजनू की, और भी बड़ी बड़ी प्यार की कथा हैं, स्टोरीज हैं, जो आपको इंस्पायर करती हैं कि दिस इज अ बेटर वे। दे डोंट केयर अबाउट द सोसाइटी, दे डोंट केयर देयर पर्सनल इंटरेस्ट। वो रात दिन उसी का ही सोचते हैं, और उसमें इतनी सेक्रीफाइस, ये जो डिवाइन लव है, इट इज बेस्ड ऑन सेक्रीफाइस। Yeah. और मैन मेड लव इज है, वो मैन मेड है, वो नीड बेस है। डिवाइन लव इज ए सेक्रीफाइस। आपको सेक्रीफाइस करने में मजा आता है। मजनू को जो था वो लैला को सुख देने में मजा था। I know, बिल्कुल ठीक बात है, 100%. रोमियो एंड जूलियट, आप देखो जूलियट, उनका भी यही था, सेम थिंग। सेम थिंग. तो जो डिवाइन लव है उसमें सेक्रीफाइस, सेल्फलेसनेस है, उसमें आप दूसरे का ध्यान ज्यादा रखते हो, अपना काम है। लेकिन एक सृष्टि का नियम है कि जब दूसरे का आप ध्यान ज्यादा रखते हो, तो इट इज ए लॉ, जो आप देते हो आपको मिलता है। You also get that. It may Yes, not be verbalized, it may not be right. codified, Yeah, लेकिन no, you you're get right. the vibrations because you emanate the vibrations which are very positive, composed of utter sacrifice. तो वही आपको जब वापस आती है, तो वो जो प्यार है, जो नीड बेस्ड नहीं है, जो डिवाइन लव है, वो संसार को बदल देता है। और ऐसा हुआ है। जैसे हम कहते हैं, रामायण भी हम पढ़ते हैं, उसमें जब भी हुई रामायण, अब हजारों साल हो गए, उसमें जो हम एग्जाम्पल आज भी देते हैं पॉलिटिकल सर्कल में, राम राज्य की कल्पना, कि दैट वाज द बेस्ट, कि एक छोटे से बंदे के कहने पे एक राजा अपनी वाइफ को वनवास दे देता। दैट इज द डेफिनेशन। लोग इसको गलत रूप से लेते हैं, लेकिन जो इसकी इंटरप्रिटेशन है, दैट इज डेमोक्रेटिक सिस्टम। एक छोटे से छोटा बंदा अगर कोई चैलेंज करता है किंग को, किंग लिसन्स टू दैट।
That is what I am talking about. So ये जो हम लव करते हैं, लव मैंने आपको बताया दो तरह का है, मैन मेड है विच इज नीड बेस्ड, आपकी नीड पूरी हुई, लव खत्म हो गया. एक है परमानेंट लव, दैट इज दिस लव थ्रू सोल, दैट इज कॉल्ड डिवाइन लव. Divine love. उसमें नीड नहीं है, उसमें सैक्रिफाइस है. तो अगर आप देखो कि जिस बंदे ने ये लव की प्रैक्टिस की हुई है, डिवाइन लव की, वो नीड बेस्ड नहीं है, वो कंट्री को भी नीड बेस्ड लव नहीं दे रहा, वो कंट्री को भी डिवाइन लव दे रहा है, उसमें सैक्रिफाइस है. अगर ऐसा बंदा प्राइम मिनिस्टर बन जाए या प्रेसिडेंट बन जाए किसी कंट्री का, डू यू थिंक ही विल फाइट? नो. No. No, he will try to find peace. He will do everything Yeah, exactly. to manage the peace. लेकिन इन रिवर्स जो नीड बेस्ड जिसका लव है, मैन मेड लव है, वो प्रेसिडेंट बन जाता है. बन जाता है. वो तो ईगो का तमाशा है, उसकी ईगो को आप हिट करोगे, यू आर इन ट्रबल. इंडिविजुअल लेवल पे भी और हाईएस्ट लेवल पे भी. तो हैविंग सेड दैट, द टॉपिक इज वॉर एंड पीस. तो पीस इज रिलेटेड टू लव. अगर आपको लव का नहीं करना आता तो आप पीसफुल हो ही नहीं. तो जब आप पीसफुल नहीं हो तो उसका जो वैक्यूम फिल अप होएगा वो वार से है. फिर लड़ाई झगड़े होगी, जेलसी होएगी, एक दूसरे को हर्ट करेंगे, जितना भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिसोर्सेज. अगर मेरे पास मिलिट्री है तो मैं मिलिट्री के थ्रू डैमेज करूंगा, अगर मेरे पास मिलिट्री नहीं है तो मैं गॉसिप में जाके लोगों को डैमेज करूंगा, उनका जो पर्सनैलिटी है उसको डिमिनिश करने की कोशिश करूंगा. That is what the lesson we should learn at this time, that these two people who are the prime ministers of their respective countries, right? Individually, they are not good people. This is my point. This is my point, and that is why it is. And then, when we live in a society, तो जो आपकी तरह जिनका लव नीड बेस है वो आपके साथ हो जाएंगे. Yeah, और जिनका लव डिवाइन है, divine. उनके साथ चाहे थोड़े बंदे हों लेकिन उनके साथ भी बंदे हुए, तो दो ग्रुप बन जाते हैं. जैसे अभी भी बने हुए हैं, ग्रुप बने हुए हैं. हम ये अब चाइना ने आज कहा है, हाँ. आई विल नॉट क्रिटिसाइज, दैट इज द मोस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर रशिया. Yeah, I know. राइट, Yes, क्योंकि that's उसकी थिंकिंग ऐसी है. yeah. सो बिकॉज देखो ना, जो 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 रूलर्स हैं कंट्री के, जो टॉप पोजीशन में, दे हैव द सेम टाइप ऑफ थिंकिंग. या सेम दैट इज व्हाई दे आर ही इज विद हिम, बिकॉज वो भी बंदा, आई मीन द कंट्री लीडर, यू कैन से ही इज डूइंग द सेम काइंड ऑफ थिंग्स ऑलरेडी. वो भी ऐसे कुछ ही कर रहा है. अब देखो Ethnic cleansing, yeah, he's doing the same thing. So that's why they got along. See? at the time of Hitler, World War II, Wait, I was going to say it that. was exactly the same scenario. Exactly the same thing. अभी देखो ना, Hitler- मुझे तो नरेंद्र जी डर ये इस बात का है, because वर्ल्ड वॉर अगर हो गया तो it's going to affect a lot of everybody in this whole world, you know. And क्या हो रहा है? It's going to affect a lot of people, and people are going to get displaced. And now हिटलर के टाइम में was in the early 40 something में था. आजकल के तो सबके पास if they press one button then you're done. There's a nuclear disaster, और ये देखो, and all these countries have it. we you know, have human wrong being people- has wrong people fought have two. Human being have fought two wars: First World War, Second World War. Yeah. In Second World War, do you believe 60 million people were killed? 60 million. 60. And who was responsible? Nobody says. अब देखो दुनिया कितनी चेंज हो गई है, कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं. कोई नहीं चाहता कि मेरे बच्चे का नाम हिटलर हो. राइट, नोबडी, क्योंकि वो इट वाज अ बैड फंडामेंटली बैड पर्सन. राइट. Yeah. लेकिन आप देखो 1939 वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड,
Mhm. 1945, it stopped. So many years. So many years. And now 1945, and now it is 2022, right? So approximately 75 years. 75 years. Yeah. Human being has learned nothing. They are Right. doing Thing. exactly Same thing. the You're right. political situation is just like Third World War. So human collective, this is another point. The collective memory of people, it's so fragile, so temporary. We don't listen anything from the history. We don't learn anything from the history. We talk about history, लेकिन सबको पता है कि भाई 60 million people were killed. And अगर अब ये वार होती है, again it will the same. It will be more because the the armaments are Yeah, exactly. I mean, more ferocious. you know, these, personally, I think what they're trying to do is ethnic. That's it. Africa maybe is called ethnic cleansing. Yeah, You know, एक दूसरे को वो उस कौम का है, उसकी वो ट्राइब ये है, नाम ये है, वो हमारे से नहीं होती. दे लुक द सेम, द लैंग्वेज सेम, खाना भी वही खाते हैं. that is true. Yeah, you are right. It's the same thing, but they want that name. भाई हमारा नाम ये होना चाहिए. Yeah. So now, I mean, I hate to say the names, but the Jewish people, they really have suffered a lot. अभी भी Ukraine में भी a lot of these people who are misplaced, अभी भी वही जगह. वही है ज़्यादातर. So we under this Terrible. platform we are talking about war and peace. तो पहले तो peace को हमें समझ लेना चाहिए कि peace relates to love. अगर आपको love करना नहीं आता तो peace you are not peaceful. So if you are not peaceful, you are not leading a happy life. So peace is related to happiness. Yes. Yeah. It is not either or, it is both. The other name of happiness is peace. Yeah. तो अगर किसी ने हैप्पी बनना है तो उसको पीसफुल बनना पड़ेगा, और पीसफुल बनने के लिए लव चाहिए. लव, हेट नहीं, गॉसिप नहीं, टॉक्सिक थॉट्स नहीं. इंडिविजुअल लेवल पे जब हम पीसफुल बन जाते हैं तो चांसेस आर, मेरी एसोसिएशन में जो जैसे आपकी एसोसिएशन में इतने लोग हैं वो भी बदल जाते हैं कि बिकॉज यू आर एमिनेटिंग वेरी पॉजिटिव वाइब्रेशंस. तो दुनिया में सारी वाइब्रेशन है, जैसी वाइब्रेशन हम एमिनेट करते हैं वो वैसी की वैसी आ जाती है. जैसे किसी ने एग्जांपल दी कि the guy went to at the top of the mountain and थोड़ा सा नीचे आके दोनों तरफ माउंटेन थे, तो he went to the valley and though both sides the mountain peaks are very high, so he started pretending the voice of the dog की तरह, मतलब बार्क करना उसने शुरू किया. था ह्यूमन बीइंग, और जो एकोइंग आई I know. वो भी डॉग की थी. जो करने वाला तो आदमी था, लेकिन जो एकोइंग वापस आई वो डॉग की थी. सो दैट इज ए क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन. Yeah. जो मैं वाइब्रेशन क्रिएट करता हूँ, अगर पहाड़ को पता है, अगर माउंटेन की चोटी को पता है, वो उसने वैसी की वैसी आपको दे दी. उसने कुछ उस पे मिंगल नहीं किया, मिक्स नहीं किया. आपकी जो आवाज आपको दे दी. दुनिया ऐसी है, जैसे ही हम आवाज निकालते हैं, डॉग की निकालेंगे तो डॉग की आएगी, शेर की निकालेंगे तो शेर की आएगी, महात्मा की निकालेंगे तो महात्मा की आएगी, गुरु नानक की निकालेंगे, गुरु नानक की गए कोई नहीं है. गुरु नानक देव जो यही हमें दिखाई इसलिए नहीं देते कि हमारा 2020 स्पिरिचुअल विजन नहीं है, वो है यही. हम तो ढूंढते फिरते हैं, लेकिन है तो वो यही. लेकिन आई हैव टू डेवलप द आर्ट ऑफ 2020 स्पिरिचुअल विजन, उसके थ्रू दिखाई देते हैं. सो ये जो एग्जाम्पल है, वी शुड अंडरस्टैंड इट. कि वैली जो मैंने एग्जाम्पल दिया कि जो आप आवाज निकालोगे वैसी बात है. वैसे ही बात है. शालिनी बंसल जी कह रही हैं कि person with power has to be selfless. If they have ego, these wars will happen.
यही तो है ना, these people who are in the power, they have the ego, तभी तो हो रहा है सब कुछ। ये बहुत ईगो, इनमें बहुत ईगो है। दे डोंट केयर फॉर द पीपल एट ऑल। वैसे तो कहते हैं, जैसे आपने बोला, ये मैन मेड लव है। ओ वी केयर फॉर द पीपल, हम लोगों के लिए कर रहे हैं। दैट्स नॉट कॉल्ड लव, दैट्स कॉल्ड मैन मेड लव, टेम्पररी। उनको वो लोगों को नीड बेस है, आपकी नीड नीड जैसा है। पूरी हो गई हाँ, तो लव खत्म हो लव गया। खत्म होता है। वो लोगों लेकिन को यही बोल रहे हैं ना कि मैं ये कर रहा हूँ। आई थिंक हाफ द पीपल इन इंडस्ट्री डोंट इवन नो, they're not part of this, they don't want this thing war, they don't want it। तो इसीलिए वी शुड लर्न, वी आर नॉट ए पार्ट ऑफ दैट होल। व्हाट आई एम ट्राइंग टू शेयर टुडे दैट इट इज अवर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम जो लाइफ लीड कर, वो बाहर तो चलती रहेगी, आती रहेगी, बिकॉज ह्यूमन कलेक्टिव थिंकिंग इज लाइक दैट। लेकिन इंडिविजुअल जो थिंकिंग है, जो मैं रह रहा हूँ अपने घर में, एम आई प्रैक्टिसिंग और आई एम जस्ट टॉकिंग, दैट इज द इशू। This is the age, देखो वीना जी, this is the age of information. Yes, There's a lot of information. The that's true। whole world, the whole encyclopedia in your palm, आपके सेल फोन नो, में। ये जो You, फोन है, you don't need to you go to any have guru. everything right here in the phone। एक एक चीज मुझे नजर आती है उसमें। You don't need to go to any guru जी, कोई any saint। यही आपका सेंट है, आप कुछ भी पूछ लो वो आपको बता देगा। लेकिन the question is, am I interested? No. No, we are not using the information. We are using the information in a wrong way. Wrong way, yeah। Information का मतलब होता है, पर्सनैलिटी तब चेंज होती है कि जब आपको इंफॉर्मेशन मिले। नाउ प्रैक्टिस इट। अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो इट इज इंफॉर्मेशन। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो वो आपका ज्ञान है। नाउ इट इज योर नॉलेज, क्योंकि आप उसके मुताबिक जी रहे हो। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम, वार एंड पीस, हमें रिफ्लेक्टिव भी होना चाहिए कि भाई वो तो उस नेशनल लेवल पे हो रही है, हमारे घरों में भी वार एंड पीस है। आप देखते नहीं, सोसाइटी, छोटी सी सोसाइटी है। आप कितने लोगों को जानते हो? मे बी मैक्सिमम आई विल गेस 300 पीपल। मैं कहूँगा कि आई नो 50 पीपल। तो इस नंबर में भी, इस नंबर सोशल साइकिल में भी देयर इज अ वॉर एंड पीस। There's war, peace। यूक्रेन तो बहुत दूर है, रशिया बहुत I दूर know, I know। है। बिल्कुल ऑन ठीक लॉन्ग बोला है। आइलैंड, Yes, on Long Island, there is a war and peace. yeah, बिल्कुल ठीक बोला है। आप 100%। देखो, ध्यान से देखो, without prejudice, without naming anybody, you feel it, the heat, that there is a war. The only difference is nobody has the firearms. अगर firearms Yeah, provide किए जाएं तो वो यूज होंगे। जितना तो गुस्सा है, कितना क्रोध है अंदर। बट देखो ना, नरेंद्र जी, समटाइम पर्सनली गन लेके नहीं आएगा, लेकिन एक्शंस एंड वर्ड्स, दे आर इक्वली पावरफुल एंड हार्मफुल एंड बिकम लाइक वेपन्स। नहीं, किसके उसमें एक्शन होते हैं और किसकी जो वर्डिंग, जो बिहेव करता है, कहता कुछ और है, करता कुछ और है, दैट्स लाइक ए वेपन। वो एक ही बात होगी ना, हाथ में गन नहीं है लेकिन वेपन्स हो गए, वो भी बिकम लाइक देखो, दैट। जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं ना, इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, क्लिनिकल इंफॉर्मेशन है। इट इज द थॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द थॉट। उसके बाद जो थॉट जो है वो एक्शन में बदलती है। तो दैट इज व्हाई वाइज पीपल ऑलवेज हैव बीन सेइंग दिस कि थिंक बिफोर यू एक्ट। एक्ट। People who do the reverse, they act and then they think, they end up in mental hospitals. वही है ना, उनको कहते हैं जी इसका दिमाग ठीक नहीं है। और वो जब उसका केस कोर्ट में भी जाता है, जूरी भी सुनती है, डिफेंस भी उस कहता है कि ये बंदा जो है इसका दिमाग ठीक नहीं है, क्यों जो इसने किया इसको पता ही नहीं है। वो एक कैरेक्टर था, सन ऑफ सैम, Yeah, I know। Oh my। लॉन्ग बैक। तो उसने कितने बंदे मार दिए, वो पकड़ा नहीं जा रहा था। He was in a disguise। रहता था कॉमन मैन की तरह, लेकिन रात पड़ती थी, अंधेरे में वो बड़ा शैतान था। तो न्यूयॉर्क में उसकी इतनी फियर हो गई थी, इवन इन लॉ एंड ऑर्डर
community में भी कि ये पकड़ा क्यों नहीं। But one day there is a always a reckoning day. He was caught. तो जब उसका केस चला तो उसको पूछा, क्योंकि people were interested, the psychologist और माइंड को एनालिसिस करने वाले सारे वहाँ बैठे थे। होते हैं। ये हाउ कम ये बंदा ऐसा कर रहा है। तो उसके जब इंटेरोगेशन हुई, क्वेश्चन आंसर हुए, तो उसका निटी ग्रिटी यही था कि मुझे तो पता ही नहीं कि मैंने क्या किया।